you're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay, won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. So hello guys, namaste to everyone, and once again welcome back to my channel. Hope you guys are fine and I'm doing great. So in this vlog I'm gonna tell you a story about my bike converting from classic to scrambler. So आज का ये vlog मेरा bike के ऊपर है guys. So it's gonna be a special vlog and a short one. So right now we're going to the spot so that I might click some cinematic shots. You think that I'm insane, it's your mistake. So hello guys, once again welcome back, and I hope you enjoyed the cinematics. And now let's talk about the bike. So here's my bike, and as you can see it's totally modified, as I have changed my seats and all. So guys, बात कुछ ऐसा है कि this kit I have ordered it from the Bolton Designs, the Chennai based modification workshop. So वो लोग आप लोगों को क्या क्या ऑफर करेंगे मैं वो बात कहने जा रहा हूँ. And so I will let you see what part I have ordered and what parts I have installed. So as you can see guys, the seat is changed, the seat frame is changed. As you can see, the number plate, it has been installed vertically, and the mud guard guys, आप लोगों को ये बोल्टन डिजाइन्स मड गार्ड ऑफर करेंगे. ये मड गार्ड, ये सीट का ये फ्रेम, फ्रंट मड गार्ड, और दैट थिंग, दिस नंबर प्लेट. एंड आई हैव ऑर्डर्ड एक्स्ट्रा दिस टायर हगर सो दैट रेनी सीजन में आप लोगों को या परेशान ना हो. सो गाइस, एज यू कैन सी द बाइक इट्स टोटली मॉडिफाइड. सो ये कुछ बातें थी गाइस जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था. सो दिस वाज द स्टोरी रिगार्डिंग माय बाइक चेंजिंग फ्रॉम क्लासिक टू स्क्रैम्बलर. ये बाइक मेरा 2017 का मॉडल है. इट्स अ BS3 इंजन एंड इट हैज ड्रिवन 56,650 किलोमीटर्स. एंड गाइस या अभी इसका थोड़ा कुछ और अब इंस्टॉलेशन बाकी है, जैसे कि आपका ये साइलेंसर इंस्टॉल करना है और ये हैंडल इंस्टॉल करना है, स्क्रैम्बलर हैंडल थोड़ा हाई वाला इंस्टॉल करना है, और एक दो पार्ट्स है जैसे कि पीछे का इंडिकेटर इंस्टॉल करना है. एंड या गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग. सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब के साथ. एंड इसी तरह आई विल बी ब्रिंगिंग अप नेक्स्ट मोर वीडियोस. टिल देन स्टे ट्यून्ड. एंड यही था गाइस आज का वीडियो.
So I hope you guys enjoy the vlog. And here's my friend Getcho. Hi Bandan. Yeah. So yeah, I hope you enjoy the vlog, guys, and keep watching, keep believing, keep supporting, guys. And I will see you guys in my next vlog. So till then, stay tuned and enjoy watching, guys. Bye bye. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think Here's a pro scooty rider जो हमारे आगे आगे चल रहे हैं. ये तो भाई लोग pro scooty rider, water riding man.